So any doubts in conservation of linear momentum? So I will wait for 1 more minute. Meanwhile, you can ask if you have any doubts. Then we will start with the discussion of conservation of energy. So I am starting with the discussion now. So we have talked about conservation of linear momentum, and we saw that Euler equation was just a special case in which we were applying conservation of linear momentum to this inviscid region of flow. So that was what was called as Euler equation. So we shall be taking these equation forward so that we can now derive an equation for conservation of energy. So before we start with the conservation of energy, we need to make certain mathematical manipulations, and these manipulations are only done so that we arrive at a more simpler expression. There is no other motivation behind that. So this was the expression, if you remember. This is the expression for Euler equation. Now I want to ask a question. This equation is valid for what? This equation is valid for what? Stationary and non-deforming. That is there, stationary and non-deforming, as well as in inviscid region of flow. That already I know, but my question is, this equation gives you the conservation of linear momentum in inviscid region of flow for a point or for finite size control volume. This expression. So finite size control volume. Be careful in this. What were these DFS, DFB? If you remember, this means, what is the difference between this equation and this equation? If I mark this equation as, so this was one equation, I am writing down an equivalent equation. Let me know what is the difference. So what do you think is the difference in this red equation, this equation, and this equation? What is the difference between A and B? What is the difference between A and B equations? Anyone? What do you see? What is the difference? This is integral equation and this is differential equation. So please remember, differential equation gives you the values of these unknown quantities, that is pressure, velocity, and all that stuff, at each and every point. So if this was the control volume, this differential equation actually helps you to give the value of the variables at each and every point. That is, this is defined essentially for this differentially small control volume, and in the limit when this differentially small control volume tends to 0, you happen to find out the conservation at a point. यानी क्लियर है? ये जो था आपको याद होगा, ये है डिफरेंशियली
स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम पे सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जब ये डिफरेंशियली स्मॉल वॉल्यूम टेंडिंग टू जीरो होगा, इवेंचुअली आप फोर्स इक्वल टू मास एक्सेलरेशन किस पे कैलकुलेट कर रहे होगे? एक पॉइंट पे। हाँ जी, क्लियर है ये? सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, this is the corresponding integral equation. So you should be careful in this. Only integrating this equation will fetch you the conservation of linear momentum for the entire control volume. हाँ जी, clear है? Any doubts to anyone? So we have come up with conservation of linear momentum in inviscid region of flow for a differentially small control volume, and in the limit as this control volume tends to zero, that is dV when tends to zero, this becomes valid for a point. If I integrate it, this becomes valid for a finite size control volume. And you clear hai? Any doubts to anyone? So this is conservation of linear momentum for inviscid region of flow or Euler equation. I am making a small mathematical manipulation. I am putting this term equal to the sum of these two terms. So this is a mathematical identity. So please, and you will find the proof of this in any standard calculus textbook. So I will not go into details of this. This is a standard identity. So you know that this term could be written down as sum of these two terms. And the sole motivation behind using this identity for this term is simplification. Nothing more than that. I want to further simplify this expression. So I am making some mathematical manipulation for this. Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? So I have started with the Euler equation. I am simplifying the terms. Now let me know, can you simplify this term further? This term? Can you simplify this term further? I have written down instead of this, these two terms. Can I simplify this term further or not? Anyone? अगर कर हम वॉल्यूम को एज एरिया इनटू कोई एक और फैक्टर ले ले तो फिर हम सॉल्व कर सकते हैं एरिया को, क्या वॉल्यूम को क्या कह रहे हो? एरिया इनटू वॉल्यूम को एरिया इनटू अनदर डायमेंशन लेकर के अगर हम सॉल्व करें मतलब हाँ, तो हो सकता है सर? वो हो सकता है, लेकिन वो जनरल केस के लिए वैलिड नहीं होगा ना। अगर आपके पास ऐसे ज्योमेट्री होती, कोई सिंपल सिलेंडर होता, तो आप π/4 d² इंटू ये L कर देते। यस सर। ठीक है, लेकिन ये वैलिड कब है? जब आपको नोन है ज्योमेट्री और उसकी शेप बहुत सिंपल है। जैसे सर ये फिगर बनी हुई है बगल में। हाँ, तो ये हमने आर्बिट्रेरी बनाया है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मैं आपको पूछूं इसका एरिया फाइंड आउट कर दो, तो आप क्या कहोगे? L into B सर कहूँगा। L into B। तो आपको इंटीग्रेशन तो लगानी नहीं पड़ी। यस सर। अगर मैं आपको बोलूं आप ये एरिया फाइंड आउट कर दो इसके अंडर, तो क्या करोगे आप? इसको सर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इंटीग्रेशन, बस बेसिकली इंटीग्रेशन यूज कर रहे हो ना? यस सर। तो यही इसका बेसिक है कि अगर तो सिंपल ज्योमेट्रीज हो तब तो ये बहुत ही सिंपल वे में आप इसको डिनोट कर सकते हो, लेकिन जब आपने एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाना है, then you require something more general, and that's why we have taken some arbitrary control volume and then we want to integrate it for that control volume. हाँ जी, क्लियर है? यस सर। हाँ जी, बताइए।
सर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, इसमें आपने बताया कि अगर ये जो फाइनाइट वॉल्यूम है, ये जैसे डीवी, अगर हाँ इसको जीरो को अप्रोच कर लेंगे तो ये पॉइंट के लिए वैलिड हो जाता है। हाँ तो सर ये फिर लैग्रांजियन नहीं हो गया? हाँ लेग्रांज आप समझ। अब ये बताओ ये कौन सा टर्म है, ये क्या चीज है? फोर्स यस सर। पर यूनिट वॉल्यूम है। यस सर। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना। प्रेशर के क्या होते हैं यूनिट्स? पास्कल। पास्कल होते हैं, न्यूटन न्यूटन पर पर मीटर मीटर स्क्वायर स्क्वायर। होते हैं। यस सर। और जो ये डेल ऑपरेटर है इसका भी पर मीटर होता है, यस सर। तो ये न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया। यस सर हो गया। तो फोर्स पर वॉल्यूम हो गया। यस सर। अब ये जो फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये किस पे लग रहा है? सिस्टम पे लग रहा है कि कंट्रोल वॉल्यूम पे लग रहा है? सिस्टम पे लग रहा सिस्टम पे लग रहा है। तो ये लैग्रांजियन हुआ पार्ट। है। यस सर। ये पार्ट क्या है? कंट्रोल वॉल्यूम के थ्रू सब यस चीजें हैं, सर। तो ये आइलैंड पार्ट है। यस सर। तो हमने इन दोनों को कनेक्ट तो किया हुआ है ना। यस सर। आप ये बात समझ रहे हो? हमारे को पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन है। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। यस सर। हमें ये पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ इज वैलिड ओनली फॉर गिवन मास, इट इज नॉट वैलिड फॉर रीजन इन स्पेस। ठीक है। यस सर। तो हमने फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन जो है ये सिस्टम के लिए इक्वल टू कंट्रोल वॉल्यूम के लिए प्लस सम ये करेक्शन टर्म आ जाती है। यस सर। आप समझ के बात की? अगर मेरे पास न्यूटन का सेकंड लॉ है, ये मास इनटू एक्सीलरेशन है लैग्रांजियन वाला। अब यहां पे है, ये है आयलरन वाला। ये दोनों इक्वल तो नहीं है। इसमें क्या है? ये एक करेक्शन टर्म है। वो करेक्शन टर्म यस सर। क्या है आप जो ये कर रहे थे? बेल्ट ऑर्डर होगी। यस सर। तो ये करेक्शन टर्म है। तो लैग्रांजियन के लॉ को और आयलरन के लॉ को ये इक्वल तो नहीं है, ये इस करेक्शन टर्म से रिलेटेड है आपस में। ठीक है ना? तो जैसे अगर मैं बोलूं 5 है, 5 इज इक्वल टू 2 प्लस समथिंग, दैट यस समथिंग सर। इज दिस थिंग। 2 इज आयलरियन, 5 इज लैग्रांजियन। यस सर। अब क्लियर है? तो ये आपने ध्यान में रखना है हमेशा कि लैग्रांजियन और आयलरियन हैंड इन हैंड आपको दिखेंगे हमेशा, क्योंकि हम दोनों में कनेक्शन डेवलप करना चाहते हैं। उसका रीजन भी ये है कि हमारे पास जो लॉज हैं दैट आर ओनली डिफाइंड फॉर लैग्रांजियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिख रहे हैं, वी कैन ओनली डिफाइन इट फॉर अ सिस्टम, बट वी नो दैट टू कन्वर्ट फ्रॉम सिस्टम टू कंट्रोल वॉल्यूम we have something called Reynolds transport theorem, and this is the basic application of Reynolds transport theorem. हाँ जी, क्लियर है? यस सर। So this was the Euler equation, and in Euler equation linear momentum is conserved. The only stipulation is that it is conserved in inviscid region. यहां तक तो सबको क्लियर है? अब हम फर्दर चल रहे हैं, हम इसको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से लेके जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तक। तो वहां तक ले जाने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। उनमें से फर्स्ट मैथमेटिकल मैनिपुलेशन क्या है कि जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स हैं हम उनको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो इस टर्म को सिंप्लीफाई मैं इस आइडेंटिटी से कर रहा हूं। तो मैंने इस टर्म की बजाय आई हैव रिटन डाउन दीज टू टर्म्स as per this identity, and this is a standard vector identity. So if I ask you 2 plus 3 is equal to 5, do you have any answer for this? Why? If I say a plus b is equal to some vector c, or if I say a into a plus b, you know that this is equal to a times a plus a times b. So these are certain rules which we have devised ourselves. So these are
pre-agreed upon rules. So mathematics is nothing more than set of pre-agreed set of rules. Likewise, this identity is also pre-agreed upon set of rules. Nothing more than that. But this rule actually helps us to explain what is happening in the real world. So that's why we consider that this is true. Nothing more scientific to it. If I ask you what is meant by, for instance, 2 plus 3 iota, can you define what is 2 plus 3 iota? What do you mean by imaginary? Is there something imaginary in actual world? So imaginary does not mean this is imaginary. It is just another way to represent a kind of mathematical operation. So please remember, there is no real thing, no imaginary thing. These are simple names. Like we have negative numbers, minus 2. Minus 2 doesn't mean anything as such, abstract. 2 doesn't mean anything. It is only our own imagination that we are building up the stories. So that is a little bit of philosophical. You will get into details of this once you have attended many courses on this. So I will not go into details of those. So as of today, my sole objective is I want to derive expression for conservation of energy. And my starting point is conservation of linear momentum in inviscid region of flow. So with this as the starting point, I know that this is the Euler equation. I want to simplify the terms. So I am simplifying this term with this identity. Now, how can I simplify this term? How can I simplify the first term? Anyone? How can I simplify this term? Which rule should I apply? Can I apply product rule? Product rule, yes, sir. So what do I get? Del P with respect to dt keeping V constant. So this is correct. Any doubts to anyone? No, Any sir. doubts to anyone? So I'm writing down here. So this equals rho curly V by curly T plus V curly rho by curly T. So I have written down instead of this, these two terms. Now let me know, this is say first term, this is second term, this is third term. Can you combine certain terms here and put them equal to 0? I am giving you a hint. By the way, what is continuity equation? Anyone? What is continuity equation? If you remember. A1 V1 equal to A2 V2. That is not the most general form. I am asking you the most general form of continuity equation. So del rho. Curly rho by curly T plus Del rho U by del dot rho V is equal to L by T 0. is equal to 0. So now you will get to know why I have done this kind of mathematical manipulation, because I wanted to come up with such terms so that I could put equal to 0. So can you identify in terms 1, 2, 3, can certain terms combine together to form this expression or not? Try to figure out. Which terms can I combine? This is one term, this is second term, this is another term, this is another term. Can I combine any of those 4 terms to get this expression? Yes, sir. वो del rho by del T एक वहाँ पे. So I Sir, can V combine vector. this term, Yeah, plus V vector del vector dot rho V vector. this one. So what do I get? V common, curly rho by curly T plus del dot rho V. तो ये क्या हो जाएगी? 0.
by continuity equation. So what I am finally left with? What is the final expression I am left with? Velocity 0. So I have done with this term and this term. What I am left with? This term and this term. So finally, help me write down this. I am writing down here del minus del P plus rho B is equal to, what should I write down? What was there? So it was something like rho curly V by curly T plus what else? Rho dot rho E vector dot V. This was the one. yes. So what can I take common as? Any doubts to anyone? Now let me know, is this expression known to you? Is this expression known to you? Have you seen such kind of expression anywhere? Anyone? I'm giving you a hint. What is this equal to? Total differentiation. This substantial derivative, this was equal to a particle, and this was also equal to ax, y, z, t. So this was called the substantial derivative term. What was its value equal to? If you remember. Any clear hai? You know that d by dt was equal to curly by curly t plus v dot del. Yes, sir. याद है आपको ये? Yes. पढ़ाया था. So this becomes equal to what? So this was sum of all forces per unit volume. This should equal to what? Mass times acceleration per unit volume. If this is acceleration, mass was rho into volume. So you divide it by volume, you get this expression only. So you have end up in a very simplifying expression, that is simply putting force is equal to, force per unit volume is equal to mass acceleration per unit volume. It is as simple as that. But now you have got the values in terms of velocity vectors and pressure. So those are flow variables now. Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? This was force per unit volume, this term. This was the Eulerian term. I was simplifying these terms. Eventually, because this is force per unit volume on system, this should also equal to mass into acceleration per unit volume of the system as well. So I could convert this term to this mass into acceleration per unit volume as such. And any doubts to anyone? Any doubt to anyone? So this is the starting point of Bernoulli's equation now. Till this point, this is still an Euler equation. The only thing I have done is I have made certain mathematical manipulations to the Eulerian part of the equation. The Lagrangian part remains the same. That is the only manipulation I have done. This manipulation has been done by using two things. One was the product rule and the other was the product rule and there was the identity I used. Any doubts to anyone?
Any doubts to anyone? Now I am coming to the Bernoulli's equation. Now try to recapitulate what you have learned in your 9th class. If some force is acting, and so this was some ball which was moving some velocity v1, you applied a force on it, its velocity changed to v2. So what do you think? Work done by you should be equal to what? Work done by you should be equal to what? Force into displacement. Hanji? Force into displacement, sir. Rate of change of momentum. F Yes, dot sir. dl is Rate what? of change of momentum. This is, you define it as work done. Yes, sir. And this is what? What are the units? Units are force per unit, mass per unit. Joule? Yes, sir. Sir. Newton meter. Units of energy only? G. So what does that mean? Work done is actually a form of energy. Yes, sir. Yes, sir. आप समझ रहे हो ना, जैसे आपका ये मान लीजिए रूफ है, आपने ये स्टेयर केस है, यहां पे एक बॉल पड़ी है, सो इट्स पोटेंशियल एनर्जी से 0 here. You bring it to this location which is at height h, its potential energy becomes mgh. What is the work done by you? This was the force of gravity acting on it. Against this you were taking it out, taking it up. So the work you did to bring this ball to this place has been stored as energy if I neglect any kind of friction and all those. Any clear? So can you see the relationship between work done and energy? Is that clear? Yes, sir. So what does that mean? If I want to convert this equation to a corresponding equation of energy, what should I do? Common sense. This is, Multiply by displacement. so I should dot it with displacement vector. Is that clear? So some force was acting. This is force per unit volume. I am taking dot product of this force per unit volume with this displacement vector dl, that is given as dxi plus dyj plus dzk. So I am arbitrarily choosing a direction in which I am assuming a differentially small displacement due to this differentially small force. Are you clear? Any doubts to anyone? So Euler equation, all the right hand side terms I have brought to the left hand side, and on the right hand side I am left with this. I have still not dotted it with dl. So can you understand, this is not 0, this is 0 vector or null vector, because this is force per unit volume and force is a vector quantity. So here should be a 0 vector. This should be carefully noted. Any doubts to anyone? So I am starting with the Euler equation. First step I have done is I have brought the terms on the right hand side to the left hand side, so that on the right hand side I am left with 0 vector. Now I am dotting it with dot dl. I am dotting with the dl vector. Now you know that on the right hand side you are dotting u with dl. Now it is 0. So this is now a scalar. And you know that energy is scalar. Any clear? Every term here when dotted with some
displacement vector will also change to a scalar quantity. So I am coming from a vector equation that was conservation of linear momentum in inviscid region of flow to conservation of energy in inviscid region of flow by only one manipulation, that is I am dotting it with dl, this equation. Any doubts to anyone? सर आपने डीएल के साथ ही डॉट करा. हाँ जी, डीएल के साथ डॉट कर दिया, ये समझ आ गया आपको? डॉट क्यों किया आप ये पूछ रहे हो? यस सर. मैं वही पूछ रहा हूं आपको. जैसे एग्जांपल मैं बोलूं आपको छत पे बॉल लेके जानी है, तो मैं आपको पूछूंगा, मैं आपके इस मोशन को कोई वर्क नहीं मानता, ठीक है, तो वर्क कितना कर रहा है मैं आपको पूछूं. या एग्जांपल बोलूं, आपने बॉल ऊपर फेंकी यहां से, ये हाइट h गेन कर गई, तो कौन वर्क कर रहा है इस पे, बॉल पे? जब बॉल ऊपर जा रही है, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? सर अपवर्ड डायरेक्शन. फोर्स किस, मैंने तो फेंक दिया, तो इसको ऐसे मत लो, ग्रेविटी. आप ऐसे लो कि मैं सिंपल से पूछूं आपको, आप यहां पे खड़े थे, ये आपकी घर की छत है, आप यहां पे खड़े थे, आपके हैंड में कोई बॉल थी, आप बॉल को अपने साथ लेते हुए ऊपर चढ़ गए, यहां पे इस बॉल की क्या पोटेंशियल एनर्जी थी? सर जीरो. जीरो थी. काइनेटिक एनर्जी थी कोई? नहीं थी, क्योंकि नहीं सर. स्टेशनरी थी. नहीं थी. ठीक है, यस. इसकी कितनी एनर्जी होगी? जीरो. आप इस बॉल को लेके ऊपर चढ़ गए, यहां पे आ गया, इस बॉल की एनर्जी क्या है इस टाइम पे? सर एमजीएच, मतलब जो हाइट चढ़ा है ऊपर. ठीक है, इस बॉल की एनर्जी क्यों चेंज हुई? क्योंकि सर ये कुछ हाइट गेन कर ली सर. हाइट गेन कर ली. हाइट गेन कैसे करी? आपने कुछ काम किया इसको, बॉल को ऊपर ले आने के लिए. हाँ सर ठीक है. वो काम किस में स्टोर हो गया एज पोटेंशियल एनर्जी? यस. तो वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया. यस सर. इसका मतलब क्या हुआ? वर्क डन ऑफ एनर्जी आपस में कन्वर्ट होते हैं. यस सर. जैसे अगर मैं बोलूं, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, इस पे मैंने स्प्रिंग लगा दिया, मान लो यहां से ऐसे, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, इस स्प्रिंग को मैं ऐसे खींचता हूं, ठीक है, ठीक है. तो यहां पे तो ये इक्विलिब्रियम में था, जब मैंने इसको खींचा तो मैंने कुछ वर्क किया इस पे, मैंने फोर्स लगाई, इसको मैंने डी डिस्प्लेसमेंट दिलवा दी या डीएल दिलवा दी, तो मैंने वर्क कितना कर दिया? एफ डॉट डीएल. अब अगर मैं यहां से इसको छोड़ूंगा तो ये वापस जाएगा. यस सर. तो इस लोकेशन पे इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि मैं इसको खींच के ले आया, और जब छोड़ूंगा वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी. एनर्जिक एनर्जी. तो मेरा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में. एनर्जी में. यहां क्लियर होगी बात? यस सर. अब मेरे पास फोर्स की इक्वेशन पड़ी है, ये वाली आयलर इक्वेशन की, ये फोर्स की इक्वेशन है, ये तो क्लियर है आपको? यस सर क्लियर है. अब इसको जब मैं डॉट विद डीएल कर दूंगा, इसका मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं? सर वर्क डन. वर्क डन. और वही चीज कंजर्व होगी एज एनर्जी. एज एनर्जी. ठीक है सर. तो मैं फोर्स से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पहुंच गया एक डॉट प्रोडक्ट लेके. हाँ जी, क्लियर है? ठीक है सर. यस सर. So I have taken this dot product here. Now the only simplification I require is कि मैं इन सारों को ओपन अप करके इनको और सिंप्लीफाई कर पाऊं. तो अब मुझे एक एक टर्म का बताते जाइए, then I will. So what should I do now? I know that this is dot with dl, तो राइट हैंड साइड तो जीरो होगी, ये तो सबको समझ आ रहा है. दो वेक्टर्स हैं, उनमें से एक नल वेक्टर है, तो उसका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट. अब लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास ये टर्म्स हैं,
ये 4 टर्म्स हैं, इनको मैंने डीएल से डॉट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेल डॉट, और मोर अप्रोप्रिएटली व्हाट इज डेल पी डॉट डीएल इक्वल टू? व्हाट इज दिस इक्वल टू? व्हाट शुड आई राइट डाउन? राजेंद्र, सर ये लिख सकते हैं सर, del p by del x into dx. del p by del x into d l नहीं आए. यही लिख रहे हो आप? जी सर. व्हाट इज दिस इक्वल टू? This will be equal to sir डीपी, gradient. Yes. नॉट ग्रेडियंट, डीपी. Yes sir dp वो gradient है. Del P is gradient. You dot it with DL, you get dotted with dp. ये तो क्लियर है. जी अगर सर. आप कोई भी, आपको याद होगा, आप कोई फंक्शन लिखते थे DF, आप ऐसे लिखते थे, इफ यू रिमेंबर. और इसको हम ये भी लिख सकते थे, जो हमने डेल की जो डेफिनेशन बताई थी. सो दिस इज डीपी. एनी डाउट टू एनीवन? Any doubts to anyone? What about the second term? What about the second term? So this term has changed to minus dp. Any doubts to anyone? So del p dot dl has changed to minus dp. So I'm writing down here del p dot dl is equal to dp. And this is a minus sign because you have a minus sign here. What about this term when you dot it with dl? Now what is b vector? What is b? What is b? This is body force per unit mass. B vector is the body force per unit mass. So in general, this body force could have 3 components. But as far as Earth is concerned, which direction and which component is predominant? Why? J direction. J direction. So you assume bx equal to 0, 0. bz equal to 0, and by is equal to what? Minus G. Minus G. And clear है? Any doubts to anyone? So rho b vector now becomes equal to, what should I write down? Rho b vector alone becomes equal to minus rho g. minus rho g. तो यहां पे क्या लिखूं? J क्या? Clear है? Any doubts to anyone? So please remember, Euler equation includes body force in all directions, but Bernoulli's equation has this as one of the simplifications. तो अब ये ध्यान में रखना है, जब हम Euler equation में थे, कौन सी एक assumption थी? सिर्फ इनविसिड. जब हम बर्नूली में आ रहे हैं तो इनविसिड तो है ही है, और कौन सी ऐड होगी? अब वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी. वाई डायरेक्शन में बॉडी फोर्स है, दैट इज ग्रेविटी. क्लियर है? सो प्लीज कीप ट्रैक ऑफ द assumptions we are making to derive the Bernoulli equation from Euler equation. Clear? And any doubts? So when you dot it with dl, what do you get? What is dl? dxi plus dyj plus dzk. So what do I get? Minus rho G dy. So minus rho g dy. So I am putting here, I am deleting everything from this part. I am simply writing down this term rho b dot dl has now become equal to minus rho g dy. किसी को कोई भी डाउट? So we have made simplification for
this term and this term. Any doubts to anyone? Now I'm coming to the third term, that is this term. So please remember, in Bernoulli's equation, we assume steady flow. And please remember, when I say steady flow means steady flow from Eulerian frame of reference. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. If you remember, these two terms were from Lagrangian and these two were from Eulerian. So I'm putting this term equal to 0. So please remember, when this term equal to 0, that is curly V by curly T equal to 0, it means steady state. But steady state from which perspective? Eulerian perspective. आपको याद होगा मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर एक कन्वर्जिंग सेक्शन है तो उसकी वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की यहां से यहां आते हुए चेंज हो रही है, तो there is acceleration of the particle itself from Lagrangian frame of reference, but it is not accelerating from Eulerian frame of reference. So now when I am talking about steady state, I am talking about this frame of reference. That should be clear in your mind. Are you clear? Any doubts to anyone? So I write down here Bernoulli's equation. So what is the first assumption? Inviscid. What is the second assumption? Body force in negative y direction only. What is the third assumption? Steady state from Eulerian frame of reference. Any doubts to anyone? Any doubts? Now I'm left with this final term, this term, and to understand this term, now I will be using a vector identity so that I can simplify the terms. So this is what you have already, I have told you, rho can also be treated as a constant. So rho constant is also a fourth assumption. So this is the fourth assumption. You can treat G as a constant. This can also be a fifth assumption. Because here we have committed that it is body force in negative y direction, but we have assumed here that G is a constant. Likewise, rho is a constant. So these are the assumptions. Now I am changing this term which was left with this vector identity. So this is the replacement I am doing. So that should be clear. Now let me know, what can I write down this as? Half del V dot V. That is this part. This could be written down as what? मैं इसको यहां पे पूछ रहा हूं आपको, मुझे बस आप इस पैरेंथेसिस में बताइए क्या होना चाहिए. V square. V square. Anything else? Yes. 1/2. Yeah. Del. V square yes. by 2. D तो of V square by 2. ऑपरेटर भी तो लगेगा ना सर उस पे? कौन सा? 1/2 पे? नहीं सर, ऑपरेटर V स्क्वायर पे. आप मुझे बताओ V डॉट V क्या होता है? स्केलर बन जाएगा. यस सर. ये तो V स्क्वायर ही हो जाएगा. यस सर. सो आप कर रहे हो डेल V स्क्वायर. ठीक है ना, यही कर रहे हो आप? यस सर. सो दिस विल बी डेरिवेटिव ऑफ V स्क्वायर. V स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ये हाफ भी तो यहां पे जा रहा है ना. जी सर. So it is derivative of V square by 2, this term. Any doubt to anyone? So I have put for your benefit here all the terms so that you can look at them carefully and ask me if you have any doubts. Any doubts to anyone?
This term you already know it was dp. This term was minus g dy. This term is 0 by steady state. This term is d of v square by 2. And this term, that is del cross v, this is called curl of velocity vector v. So please remember, curl of a vector v is also called vorticity. We will come to this in detail in some time. Vorticity is represented by vector zeta, because this is a cross product, so it will end up in another vector, and that vector is called vorticity vector and mathematically represented by zeta. So I have simply made this del cross v as zeta. So please remember, if a flow is irrotational, then this del cross v should be equal to 0. 0 vector. So that is the definition of irrotational flow. So mathematically, if you want to find out that you are given some velocity field and someone asks you whether the flow field is rotational or irrotational, you will simply take del cross that velocity vector, and if it comes out to be a null vector, then you will say it is irrotational. If it is not equal to 0 null vector, then it is rotational flow. It is as simple as that. We will come to its physical significance and physical interpretation as the course goes along. But as of today, it is sufficient to keep in mind that this del cross v is another vector that is called zeta, and this is representing the vorticity vector. Any clear hai? Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? And I have written down this in a vector form, sorry, in a matrix form. If you remember, what is del cross zeta should be equal to what? If you remember, what should I write down? Del cross zeta. Zeta is some vector. What should I write down? I, j, k, curly by curly x, curly by curly y, curly by curly z. What else? What else? हाँ जी, जीटा के लिए भी आ जाएगा ना, जीटा एक्स, जीटा वाई, जीटा जेड. तो कोई भी वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना आपको आता है सर? लेकिन इसमें डॉट भी ले रखा है मैंने साथ साथ. हाँ, तो वो तो बाद में ले लोगे. इसमें मान लो ए, आप ऐसे बताओ पहले, मान लो ऐसे होता ए डॉट बी, ए क्रॉस बी, क्या से लिखते हैं इसको? आई जे के, क्या लिखूं इसको? सर ए वेक्टर का जो भी है, ए हाँ, A1 है मान लो, A2 है, A3 है, ठीक है. इसका B1 B2 B3 ऐसे लिखते. ये क्लियर है? अब इसमें क्या आ जाता? आई कैप क्या लिखते? A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस J कैप A1 B3, what else? Minus A3 B1 plus K cap A1 B2 minus A2 B1. ये क्लियर है? A क्रॉस B को तो ऐसे लिख लेते हैं आप. यस सर, यस सर. अब इसको मैंने डॉट डीएल करना है. इसका मतलब क्या हुआ? इस पूरे को क्या करूं? डॉट dxi प्लस dyj प्लस dz के. तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये i की जगह क्या हो जाएगा? ये i कहां जाएगा? ये टर्म और ये टर्म कंबाइन करेंगे. y वाली टर्म j वाली टर्म j वाली से कंबाइन करेगी और z वाली टर्म k के साथ कंबाइन करेगी. तो मेरे पास क्या हो गया? इंस्टेड ऑफ आई गेट dx a2 b3 minus a3 b2. Likewise, instead of minus j I get minus dy. Instead of k cap I get dz. तो आप सोच के देखो,
पहले मैट्रिक्स ऐसे रिप्रेजेंटेड था, अगर मुझे अब ऐसे करना है A क्रॉस B क्रॉस डॉट DL, तो क्या रिप्लेस होगा इस मैट्रिक्स में, सॉरी इस डिटर्मिनेंट में? IJ की बजाय क्या लिख दूं? dx dy dz. dx dy dz. हाँ जी, क्लियर है? So this is what is done here as well. So cross product into dot product has been written as this determinant. Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? Now, by these simplifications, I have finally reached this expression, or more appropriately this expression. I think now you must be much more comfortable with this expression. This represents derivative of certain terms is equal to some determinant. And most of you, when you look at Bernoulli's equation, you always say P upon rho plus V square upon 2 plus Gy or Gz, whatever you coordinate you have chosen, is equal to 0. That is the Bernoulli's equation you study. So please be careful. Now I am coming to that point, that what is meant by equal to 0. And you should not arbitrarily. Naveen, irrotational, I am still coming. So please remember, till now, the assumptions are, what are the assumptions? Up till this expression. One by one. Inviscid. Second, what is the assumption? What is the Body assumption? force in negative y direction. Body force. Body force in negative y direction only. What is the third assumption? Steady flow. Steady flow from Eulerian Eulerian frame of reference. Fourth, rho is a constant. and G Yes, is sir. Fifth, Let G is a constant. So please remember, these are the only assumptions up till this point. Are you clear? Hai? These are the assumptions till this point. Now you should be very careful, because this is a very subtle point and most of us miss this point, and that's why we make numerous mistakes while doing numericals. So please be careful now. Now, for the left hand side term within this parenthesis to be a constant, what should happen? For this term to be a constant, what should be satisfied? derivative should be 0. Derivative should be 0, or the right hand side should be Yes, sir. 0. So this should be 0. Is that clear? Yes, sir. Is that clear or not? Sir, can you repeat, please? My point is, here something is written down as derivative of something is equal to some value. Determinant will give you a scalar value only. So Yes, it gives sir. you some value. So for this term in the parenthesis to be a constant, what should be satisfied? If I say dx, say dfx is equal to something, say I want to say fx is a constant. What does that mean? Derivative of this should be equal to 0. And is that clear? So derivative of this term, if it is equal to 0, that is, if this term equal to 0, it means that this is a constant. And clear? Hai? Any doubts to anyone? Please ask me if a little bit of confusion is also there. Don't ever hesitate. Is that clear or not? Yes. Now, from your linear algebra, let me know
when can this determinant go to 0? What are the conditions? सर कोई भी रो अगर पूरी जीरो हो जाए, कोई रो या कॉलम 0 हो जाए, वो तो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया कि उनमें से इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी 0 हो जाए, या तो यही कह रहे हो आप, यस सर। या क्या 0 हो जाए? सर या फिर वोर्टिसिटी जीरो हो जाए, वोर्टिसिटी 0 हो जाए, या फिर एल वेक्टर जीरो हो जाए, या डीएल वेक्टर 0 हो सकता है? नहीं सर वो तो शायद नहीं, उसमें आप मुझे बात नहीं हो बताओ, सकता सर, वर्क ही फर्स्ट नहीं रो होगा। 0 हो सकती है, अगर फोर्स जो 0 है इसका मतलब फ्लो ही नहीं हो रहा। यस सर। थर्ड रो 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? वो सर कंट्रोल तो वॉल्यूम ही मूव नहीं कर रहा। यस सर। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकती, फिजिकली पॉसिबल नहीं है ना, मैथमेटिकली पॉसिबल है। So what is physically also possible? That vorticity is 0. So this Yes, is sir. one condition in which this term can go to 0. Are you clear? Any doubts? Yes, sir. So vorticity 0 means irrotational flow. Are you clear? अगर vorticity 0 है, इसका मतलब ये टर्म 0 चली जाएगी, then what is there? P upon rho plus gy plus v square by 2 should be a constant. What does that mean? आप मुझे बताइए, अगर vorticity 0 है, क्या ये स्टिपुलेट करती है कि dl की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हो? क्या इंडिपेंडेंट ऑफ dl है? मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये dl था, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, अगर चाहे dl इधर भी होता, dl इधर भी होता, कहीं भी होता, अगर vorticity 0 है, that is if this is 0, this is independent in which direction is dl pointing. Is that clear? Yes. So please remember, what does that mean? So this is a global constant. इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई फ्लूइड फ्लो है, यहां पे फ्लूइड फ्लो है, so this was the fluid flow and I know that vorticity is 0 here. It means any point I choose, से मान लीजिए मैंने एक पॉइंट A चुन लिया, एक पॉइंट B चुन लिया, एक पॉइंट यहां पे C चुन लिया, तो what does that tell you? PA upon rho plus VA square by 2 plus GYA should be equal to what? PB upon rho plus VB square upon 2 plus GYB, and this should also be equal to what? PC upon rho On rho plus VC square upon 2 plus GYC. GYC. So please remember, some of these three terms remain constant everywhere in this inviscid region of flow. Any clear? Any doubts? Any doubts to anyone? So I think Ayush pointed out that any of these rows could be 0. What are the other conditions in which this determinant can go to 0? सर अगर लास्ट के दो रोज हम यूनिटी कर दे तो मतलब उनको बांट के इक्वल कर दे सब पैरामीटर्स को। सर अगर कोई भी एक ही प्लेन में लाई कर रहा हो, ऐसा कुछ होता है? ऐसे प्लेन में लाई कर रहा है मतलब? सर मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास आता है, राइट? तो हाँ। अगर ये क्रॉस से तो आप आता ये है, कह तो रहे हो अगर बेसिकली कि ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर हो जाए। जी सर। तो आप ये कह रहे हैं डेल क्रॉस जीटा इज परपेंडिकुलर टू डीएल। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी 0 आ जाएगा। यस सर। क्या इस केस में डीएल के इंडिपेंडेंट है
जीरो आना? हाँ जी, नो सर। नहीं है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इस केस में अगर आप लगाओगे ये वाला एक्सप्रेशन दैट इज पी अपॉन रो, अगर ऐसे बोलूं अब मैं डेल क्रॉस जीटा इज परपेंडिकुलर टू डीएल, तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, डेल नॉट, इट इज वी क्रॉस जीटा. वेट फॉर अ सेकेंड. So it is V cross zeta. So V cross zeta is perpendicular to dl. इसका मतलब हुआ अगर ये वेलोसिटी, ये वेक्टर dl के परपेंडिकुलर है, तब ये जीरो आ रहा है. अब मुझे और बताओ, क्या आप ये चीज लगा सकते हो आप, ये कंडीशन इस केस में? क्या आप लगा सकते हैं ये कंडीशन की नहीं? सर हर डीएल के लिए नहीं आएगा। हर डीएल के लिए नहीं आएगा. वो कौन से स्पेशल डीएल के लिए होगा? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, यानी जो डायरेक्टली ऊपर देख रहे होंगे समथिंग. मतलब इस वेक्टर के अगर वो परपेंडिकुलर होगा डीएल, यस सर. तभी आप ये चीजें कांस्टेंट कर पाओगे. जी सर. हाँ जी, क्लियर है? एनी डाउट्स? वही. ये चीज ध्यान में रखना आपने. नाउ इट इज नॉट अ ग्लोबल कांस्टेंट. क्लियर? व्हाट इज द थर्ड थिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट फॉर दिस डिटरमिनेंट टू बी जीरो? सर वोर्टेक्स और वी जो है उसका अगर प्लेन एक ही हो, लाइक दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स, वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो. अच्छा, तो आप ऐसे सोच के बताओ, अगर आपको ये याद हो. सॉरी, से I write down like this. Say, wait for a second. I'm writing down here. So if I have, wait for a second, something has gone wrong. What is say I have u, say I write down here u v w, 2u 2v 2w, say a b c. Will this determinant be zero or not? Yes. Yes sir. What I have done is, if one row is Similar to some scalar multiple of other row. So that is also possible. If that is there, Yes, sir. then it is also equal to zero. yes. So Yes, please sir. remember, when I take this and this, say u and dx, they are linear multipliers of each other, I get this kind of an expression. That is, I know that u upon dx, v upon dy, and w upon dz, they are some constants. Constant. So please remember, this is the expression for a streamline. We will get to know what is a streamline. Streamline is a line in the flow at which any point you take instantaneously gives you the velocity vector. तो अगर यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट था, यहां से आपने फ्लो करवा रहे हो आप, तो these are called streamlines at a given instant. तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं वेक्टर ड्रॉ करूं, वो टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वो क्या देगा मुझे? वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा. तो इस लाइन की इक्वेशन को, इस लाइन को बोलता हूं मैं स्ट्रीम लाइन, और इसकी इक्वेशन होती है dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v इज इक्वल टू dz अपॉन w. So please remember, this can also go to zero if dl is pointing in the streamline direction. So what does that mean? P upon rho plus v square upon 2
plus gy is equal to constant for a along streamline. streamline. So again, this is not a global constant. Are you clear? Yes, sir. Or the fourth one is that these are linear combination of each other. That is the first row and second row. So please remember, I have summarized for you here so that it becomes absolutely clear. These are the conditions in which the right hand side determinant can go to 0. So the first case was that the vorticity is 0. If vorticity is 0, then DL is independent. So this now becomes v square by 2g plus gy is equal to global constant in this case. In this case, it is constant along streamline. Are you clear? Here it is a constant when DL points in a direction perpendicular to this vector. So this should be absolutely clear, these four conditions. So please remember, if you have now one last point, then I will break for today. Now I am asking you a question. So this was the object. This was the flow around this object. So this flow was rotational. This flow was rotational. I am marking points here. A, B, C, D. And I am having another region that is irrotational. I am again marking points E, F, G. Now let me know how will you apply the Bernoulli's equation for this case and for this case. सर ऊपर वाले के लिए ए और बी के बीच में और नीचे वाले के लिए किन्हीं भी 3 पॉइंट्स के बीच में. ठीक है, ये क्लियर है. तो ऊपर वाले में क्योंकि रोटेशनल है तो जो कांस्टेंट है वो किसके लिए वैलिड है? सिर्फ किस पॉइंट्स के लिए? ए के लिए और बी के लिए, क्योंकि ये सेम स्ट्रीमलाइन पे लाई कर रहे हैं. तो आई कैन सेफली राइट डाउन पी ए अपॉन रो प्लस वी ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी वाई ए इज इक्वल टू पी बी upon rho plus vb square upon 2 plus gyb. This is not equal to pc upon rho plus vc square by 2 plus rho yc, and this is also not equal to pd because these are lying on the different streamlines. Whereas in case of हाँ जी बताइए सर, जो बर्नौली है उसका जो assumption है वो ये भी तो है ना कि वो irrotational flow के लिए होता है. नहीं नहीं, यहीं पे तो गलत कह रहे हो आप. इरोटेशनल तो सिर्फ एक कंडीशन है. ठीक है, आप मेरी ये देखो, यहां पे मैंने तभी इसको टेबुलेट किया है. ये 4 कंडीशंस में राइट हैंड साइड टर्म 0 हो सकती थी. जो इरोटेशनल है वो सिर्फ एक कंडीशन है, वन ऑफ दोज. इसमें भी 0 है, इसमें इरोटेशनल होना जरूरी नहीं है. इसमें भी रोटेशन होना जरूरी नहीं है, इसमें भी जरूरी नहीं है. हाँ जी, क्लियर है? yes sir. Please be careful in this. Bernoulli's equation does not involve a rotational flow always. These are just the conditions in which the right hand side goes to 0, and one of those conditions is the rotational region of flow. So I am coming to this and then I will end. So in this case, because this is a rotational flow and we know that P upon rho plus V square upon 2 plus Gy is equal to a global constant. That is, it is independent on which point I take. So it will be valid for E, F and G equivalently. So that is the beauty of Bernoulli's theorem when applied to irrotational region of flow. सर मतलब कि अगर irrotation region of flow होगा तो स्ट्रीमलाइन चाहे दूसरी पे भी पॉइंट ला कर तब भी लगा सकते हैं ना? हाँ, तब भी लगा सकते हो. अब आपने बिल्कुल ठीक इंटरप्रेट किया है. लेकिन अगर रोटेशनल होगा,
हमने उस केस में बर्नौलीज फिर इक्वेशन लगानी है तो हम सिर्फ स्ट्रीमलाइन पे लगा पाएंगे। ठीक है। Any clear है ये? Any doubts to anyone? So I will break for today and then we will continue with the applications of Bernoulli's theorem. We have derived the Bernoulli's equation. I think it should be absolutely clear now. We will now be discussing the application part of Bernoulli's equation in the subsequent lectures. Clear? Any doubts to anyone? So I am breaking for today now. If you have any doubts, you can ask. Otherwise, I will end the meeting now. Clear? So I am ending the meeting now. Thank you, sir. Okay then. Thank you, sir.